Okay. Very good afternoon. Okay. Let me speak. Okay. So today's class is on a very important topic. Schizophrenia is one of them. Other than schizophrenia, we'll also see two other topics which are schizotypal and persistent delusional disorder. My name is Dr. Ritika Singh. I am senior resident in the Department of Psychiatry. So we'll be moving ahead under the following headings. We'll see the introductory part. Overall, what are we going to cover? Schizophrenia, schizotypal, PDD, and then evaluation and management part is something which we will be seeing in common. Okay, alag kisi ka I won't be telling, I'll telling in common ki how do we manage these patients. So let us move forward. So when we talk about psychotic spectrum disorder, there is no one particular illness. The illness is divided into many other subcategories. So the sign and symptoms of these illness may be similar, but there might be difference in the severity of the sign and symptom or the time period of sign and symptoms. तो जो ये illnesses अलग अलग defined हैं, उनकी severity क्या है और किस duration तक वो expand करती हैं और वो कैसे present करती हैं, इनमें थोड़ा बहुत difference होता है. So spectrum of psychotic disorder encompasses a range of mental health conditions which are characterized by thought process disturbances, perceptual disturbances and reality testing. Okay, how the patient is thinking, it is going to get disturbed. What the patient perceive. Perception is something when you are seeing, you are hearing something which is altered, or if it is not, the stimulus is not there, but still you are seeing or hearing something, that is something which comes under perceptual abnormality. And touch with reality of such patients are also lost. These disorders are organized in a continuum. So at one hand we have schizophrenia, in which the signs and symptoms are quite severe, like hallucination, delusions and cognitive impairment. On the other hand, we have schizotypal and PDD, that is persistent delusional disorder. In here, the sign and symptom may not be as severe as schizophrenia, but certain deficit can be seen in every aspect of life, in interpersonal deficits or social or occupational deficits can be seen in such diseases. Let us move on to schizophrenia. So all of you are aware of the term schizophrenia. Do you know what schizophrenia is? Yes or no? Some of you know, some of you don't know. Okay. So there is no particular defined definition of schizophrenia. Okay. So when you talk about how do we define schizophrenia, it is a chronic illness, severe mental illness which affects your thought, your emotion and your behavior. Overall, how the life functionality is going to be disturbed, what are the clinical symptoms, we'll see in the corresponding slides. Schizophrenia is quite important because it is very much prevalent in the society, very much masked by some stigmas and differentiation. So to identify it in earliest, जितना जल्दी आप इसको पहचानोगे, उतना जल्दी इसका treatment शुरू होगा. So better will be the prognosis or outcome for the patient. Okay. We'll see from historical time. In past time, psychiatric illnesses were not considered illnesses itself. They were considered maybe due to some spiritual or higher power are being at play. They might be considered possession by spirit or some divine punishment. So slowly the time passed on. Emil Kraepelin was the scientist who started thinking that this is a form of disease. He coined the term dementia precox. Okay, which when we loosely translate it, it means early onset dementia. Dementia is an illness which is mostly seen in elderly people. बूढ़े बुजुर्गों में जिनकी याददाश्त चले जाती है, उनको समझ थोड़ा कम आता है, उनका कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है वो आ जाता है, तो दैट इज व्हाट डिमेंशिया इज. बट इफ दीज सिम्टम्स सिमिलर टू द सिम्टम्स लाइक दैट इन डिमेंशिया अगर अर्ली स्टेजेस में आ जाए तो उसने बोला दैट इज डिमेंशिया प्रेकॉक्स व्हिच इज अ साइकाइट्रिक इलनेस. Kraepelin emphasized the chronic and deteriorating course of illness, that how the illness is going to deteriorate the life of the person and how the course is chronic in nature. Then again the term schizophrenia was coined by another scientist whose name is Eugene Bleuler. Okay, if you cannot remember the name of the scientist, it's okay. Okay, it's not well in that कि आपको रट्टा मारना है उसका. So the term schizophrenia in Greek means split mind. Okay,
So here he also suggested certain signs and symptoms which are present in schizophrenia patient. More commonly, he uh, inspected the presentation of the patients of schizophrenia. So he gave 4 A's. These A's are affective disturbances, association disturbances, ambivalence and autism. So these are characteristic features which can be seen in patients of schizophrenia. Like affective disturbances means affect of the patient can be inappropriate or it could be very reciprocal. Like अच्छी खुशी की बात है patient रो रहा है, कोई गलत sad news है patient हंस रहा है. Disturbance in association of thoughts. What we are thinking is not interlinked, that are they are trailing here and there. Then ambivalence is not able to decide what to do. Suppose he'll ask patient to shake hand, he'll keep his hand forward, then he'll take it back. He doesn't know whether he wants to shake hand or not. This is one such example, not able to decide what to do. Autism is something in which social withdrawal and everything is going to come into play. Okay, then after moving on to the, after we have seen the historical background, let us see the epidemiology, that what is the prevalence. Approximately 1% of the global population have schizophrenia, whereas in India it is 1.41%, which was, there was a survey which was conducted in National Mental Health Survey. Age of onset, when you will say, it is quite seen quite early in males. Come and sit. Late teens or early 20s is the age defined age group for male, whereas in female it is seen in later stages of age, like late 20s or 30s, maybe late 30s. So illness can present. It is also ranked among top 15 leading causes of disability globally by the global burden of diseases. So the disability which is caused in every aspect of patient's life. Okay, high unemployment rate because of the illness, social stigma and isolation, it leads to not contact the treating authority. Okay, reduced access to care, reduced life expectancy by 10 to 20% due to comorbidities or suicidal risk in patient. Okay. Now etiology, see, this is something quite important because all the psychiatric illness which we are going to see, psychiatry का इसके बाद का भी जो lecture होगा या इसमें भी जो और topics हैं, this biopsychosocial model, biological, psychological and social model, this is something which will explain the etiology or causes of all the psychiatric illnesses. Okay, so it explains schizophrenia as a result of interaction between biological, psychological and social factors. Okay, there are 3 factors. So to understand how the disease is developed and how you will treat the patient, you will treat patient biologically also, psychologically also and socially also. So this is very important. Just a diagram to represent that what are biological causes, psychological causes and social causes. We will see in later slides what are they. Okay. Okay, biological factors, what do they say? See, you don't have to remember the names of genes if you cannot remember, okay? It says that schizophrenia have genetic predisposition. So, if your family members, immediate family members have schizophrenia, the chances of having schizophrenia in that individual increases in comparison to general population because certain genes are carried on in familial traits which are responsible for causing schizophrenia. Second, it says there are neurochemical dysregulation. There are certain hormones or neurochemicals like dopamine, serotonin, norepinephrine, glutamate and GABA. So, amongst them, dopamine, glutamate and GABA dysregulation is mainly responsible for causing schizophrenia signs and symptoms. So, this is just a representation if there are monozygotic or identical twin. The percentage of having schizophrenia is 48%. Similarly, if both the parents have schizophrenia, the chances of having schizophrenia in the children is approximately 46%. Similarly, dizygotic or non-identical twins, the chances decreases in comparison. Okay. Similarly, one parent is affected, it is less in comparison to when both parents are affected. So you can see strong genetic correlation is seen in this diagram. Again, I told you that dopamine, glutamate and GABA, these are the 3 hormones whose dysregulation can also cause signs and symptoms of schizophrenia. Again, brain structure and functional abnormality, enlarged ventricle, reduced gray matter, neurodevelopmental factor like in utero exposure to certain infection, hypoxia or malnutrition during pregnancy can also act as a risk factor for developing schizophrenia.
In psychological factor, we'll see what is psychological vulnerability of the patient, how the patient handles the stress, that is coping mechanism. If there are any cognitive impairment, if there is any intellectual deficit in the patient, if any associated family conflict or trauma is there or not. If childhood trauma, social factor again quite similar, childhood trauma or abuse, social economic status is very low, poverty and employment or any other stressor, substance abuse, especially cannabis is very much related to initiate the sign and symptom of schizophrenia, and stigma and discrimination, which we have already read. Now, yahan tak it is clear? Okay. Now, how do you identify the patient have schizophrenia or not? There are 4 types of symptom: positive symptom, negative symptom, cognitive and affective. As the name suggests, positive symptoms are such which are very much visible to you, which are quite exaggerated, like patient might get very angry, abusive, patient might be actively hallucinating. आप देखोगे patient अपने से खूब जोर जोर से बात कर रहा है, लोगों पे शक वहम कर रहा है कि मेरे बारे में लोग बात तो नहीं कर रहे, मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. नेगेटिव सिम्टम इज समथिंग, नाम सजेस्ट करता है वेरी नेगेटिव, दैट पेशेंट इज सोशली विड्रॉल, वो किसी से बातचीत नहीं करने जा रहा है, ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, ओके, ही इज वेरी पुअर इन कम्युनिकेशन. कॉग्निटिव कॉग्निशन से रिलेटेड है, पुअर अटेंशन, पुअर मेमोरी, decision making is not good in cognitive symptom. Affective symptom are something related to, you can correlate with negative symptom as well, ki effectively patient can be either very irritable or he could be non-responsive, he could be blunt also. All right. So positive symptom, hallucinations, delusions or disorganized behavior. Negative symptoms, social withdrawal, emotional bending, lack of motivation and drive, apathy. Okay. Then cognitive we have, please sit properly, attention deficit, memory deficit, difficulty in concentration, poor problem solving skill. Now affective symptoms, mainly 3 kind of symptoms you should keep in mind. Diminished emotional expression, incongruent emotion, like I told you, ki such as laughing in a sad situation or appearing indifferent in a emotionally challenged situation, and certain mood related, maybe anxiety, irritability, anhedonia. Okay. Other than that, there was a scientist called Kurt Schneider. He gave certain symptoms. These are known as Schneider's first rank symptom. Okay. He divided certain symptoms, and these symptoms are very important to know because when we see the diagnostic criteria of the disease, these symptoms have an important role in them. So he decided into 4 categories. 3 is उसमें से 3 auditory symptoms है. Thought echo, third person voices and running commentary. Thought echo is something hearing one's own thought. अब कानों में आवाजें आ रही है लेकिन वो मेरी सोच जो है वो आवाजों में बदल रही है. Third person voices, hearing 2 or more voices discussing the patient. 2 लोग की आवाजें आ रही है, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. रनिंग कमेंट्री, जैसे कमेंट्री होती है ना किसी भी मैच में कि मेरे एक्शंस जो भी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे कमेंट्री आ रही है किसी की आवाजों में. ठीक है. So this is auditory hallucination. Then there are 3 thought phenomena: thought insertion, thought withdrawal and thought broadcasting. नाम में ही छुपा हुआ है. Thought insertion, when thoughts are being inserted, मेरे सोच किसी और ने मेरे दिमाग में सोच डाल दी है, मेरी सोच नहीं है. Thought withdrawal, my सोच has been taken out from my brain and it has been removed from the patient's mind. Thought broadcasting, that other people can see or hear whatever I am thinking. मेरी सोच सबको पता चल जा रही है. Okay. Next is 3 made phenomena. Made मतलब करवाया जा रहा है, ठीक है. Made affect, made impulse and made volition. Made affect refers to the experiences of emotions that feel imposed or controlled by an external force. That whatever I am feeling or whatever emotions are there in me, these are not mine. ये कोई बाहर से control कर रहा है. मेरे emotions बाहर से control किए जा रहे हैं. Then is made impulse. If I am getting a sudden urge to harm someone, that is because someone else, some external force is making those impulses in me. Okay. Urges or impulses that feel imposed or controlled by external force. Again made volition. Here volition में आपका action part आ जाता है. That जो भी मैं काम कर रहा हूँ, suppose मैंने हाथ मारा कहीं पे, तो वो मैंने नहीं किया, वो किसी external force ने मुझसे वो action कराया है. ठीक है. They are not acting of their own free will, but rather being compelled to act in a certain way. Then we have seen rest 3 phenomena in सब चीजों का. Then we have one is delusional perception, giving an abnormal meaning to a normal perception.
ठीक है। सपोज नॉर्मली आपके मैंने एक पेन दिया, आप पेन से लिखने के लिए होता है, अभी वो नॉर्मल पेन रखा हुआ है, बट आपको क्या लगा, नहीं ये पेन नहीं है, ये रिकॉर्डर है, मेरे को रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेरी आवाज रिकॉर्ड की जा रही है इसमें, ठीक है। नॉर्मल वो है, एक्सेप्ट करते हो नॉर्मल, लेकिन इसको एक डिल्यूजनल मीनिंग दे दिया है। सोमैटिक पैसिविटी इज समथिंग दैट एक्सटर्नल, जो भी बॉडीली सेंसेशन है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, these are clear sign and symptom, ये पेशेंट में आएंगे। Okay, now these are the diagnostic guidelines of schizophrenia, you need not to remember it, just for your understanding you can see. So ICD ने दो ग्रुप में symptoms को divide कर दिया है, group 1 और group 2. So one it says कि one symptom from group 1 or two symptoms of group 2 should be present for at least 1 month अगर हमें schizophrenia को diagnose करना है. All the symptoms are same which we have learned in the past. Thought echo, insertion, withdrawal and broadcasting, delusion of control, influence, passivity, hallucinatory voices, persistent delusion which are culturally inappropriate or impossible. Then persistent hallucination, disorganized thought which can lead to irrelevant speech or neologism, catatonic behavior, negative symptoms and significant change in behavior like loss of interest, aimlessness or social withdrawal. Okay. तो और इन्हीं टाइप पे स्किज़ोफ्रेनिया के सब टाइप भी डिफाइन किए गए हैं ICD-10 में। DSM जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो ऐसा सब टाइप पे इतना नहीं एम्फेसाइज करता जितना ICD-10 करता है, और इसके बाद का जो ICD आएगा वो भी सब टाइप्स पे इतना एम्फेसाइज नहीं करने वाला। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया इज समवन जहाँ पे विच इज डोमिनेटेड बाय डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। हैबिफ्रेनिक में डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, पुअर सेल्फ केयर और ये सब चीजें ज्यादा मिलेंगी। कैटेटोनिक में आपका साइकोमोटर डिस्टर्बेंस है। कैटेटोनिया इज समथिंग जिसमें आपका पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स आपको देखने मिले, इधर द पेशेंट इज वेरी क्वाइट, ही विल नॉट टेक टॉक, ही विल बी नेगेटिव एकदम, ही माइट attain certain body position which are uncomfortable and but he will keep on maintaining this. For example, पेशेंट ने ऐसे हाथ उठाया है, वो 10 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहेगा किसी उससे, ठीक है, स्टेयर कर रहा है वो ऐसे ही करता रहेगा, ठीक है। एंड कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसमें एक्साइटमेंट भी हो सकता है, कभी कभी पेशेंट बहुत एक्साइटेड भी हो जाता है, लोगों को मारने लग गया, कुछ अबनॉर्मल हरकतें करने लग गया। गेटिंग इट? नेक्स्ट इज अनडिफरेंशिएटेड, जिसको किसी पे फिट ही नहीं किया सकता। पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया डिप्रेशन, सर्टेन डिप्रेसिव सिम्टम्स एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया इज देयर, इसमें सम नेगेटिव सिम्टम्स आर persistent after the first psychotic event has happened, एंड सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में ज्यादातर नेगेटिव सिम्टम्स, एमलेसनेस और ये सब जो हमने देखा वही देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव सिम्टम ना के बराबर। सिमिलरली DSM-5 ने भी यही गाइडलाइंस दे रखी हैं। ओके, देयर आर सर्टेन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, कि कुछ सिम्टम्स, कुछ फैक्टर्स अगर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में है तो प्रोग्नोसिस अच्छी हो सकती है, आउटकम अच्छा हो सकता है अगर ट्रीटमेंट दे। अगर कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आउटकम बुरा भी हो सकता है। जैसे कि पेशेंट का अगर बहुत अर्ली ऑनसेट है, बच्चों में अगर आप बहुत अर्ली ऑनसेट में स्किज़ोफ्रेनिया अगर 15-16 साल में दिख रहा है तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है। नेगेटिव सिम्टम्स हैं, मेल जेंडर है, कोई एसोसिएटेड फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, पुअर सोशल सपोर्ट है, प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी में पुअर कोपिंग और ये सब है तो नेगेटिव आउटकम होगा। सिमिलरली पॉजिटिव में अक्यूट ऑनसेट है, थोड़ा लेट ऑनसेट है, प्रोमिडेंट मूड सिम्टम्स आर प्रेजेंट, फैमिली हिस्ट्री में बाइपोलर का इलनेस है, पेशेंट का सोशल सपोर्ट अच्छा है और प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी अगर अच्छी है तो these are good prognostic factor for the disease. When we're talking about differential diagnosis is something you should be able to differentiate schizophrenia from other diseases which might have similar symptom. जैसे कि बहुत बार मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर का नाम आपने सुना होगा, उसमें भी साइकोटिक सिम्टम होते हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूड डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया। इन मूड डिसऑर्डर मूड सिम्टम्स ज्यादा होंगे, पेशेंट बहुत ज्यादा मूड एक्साल्टेड होगा या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होगा। सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस, एसोसिएटेड कोई सब्सटेंस यूज होगा, ठीक है, कोई स्टिमुलेंट ले लिया या कैनबिस ले लिया। सर्टेन पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर देयर, सर्टेन ऑब्सेसिव डिसऑर्डर विद पुअर इनसाइट, brief psychotic disorder or organic psychosis. There are certain medical conditions which can also precipitate like psychiatric illness. So you should be able to differentiate schizophrenia from it. Next, we'll move on to schizotypal. Schizophrenia is clear? Okay? ठीक है. So, next is schizotypal disorder. What is schizotypal? It is basically called a personality disorder in which pervasive pattern of social and interpersonal deficit and cognitive distortions are present and along with eccentric behavior. Full-fledged psychosis like schizophrenia won't be there,
but certain behavior will be quite odd. You might say कि patient is behaving थोड़ा सा oddly. He might have some, you know, restriction when he goes out in society. He might not have very close friends. उसको बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट होगी. वो लोगों से ज़्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा. थोड़ा अलग रहना कोशिश करेगा. ठीक है? It is considered as a part of schizophrenia spectrum disorder, but lack full-blown psychosis. Again, 3 to 5% आपका prevalence है. More common in male. It can also co-occur with mood disorder and substance use. And patient, please don't talk. High prevalence among first degree relatives of individual with schizophrenia. If someone has schizophrenia, there are high chances कि schizoid personality disorder उसके first degree relative को हो सकते हैं. Then we are talking about what are the clinical features. Social and interpersonal deficit, discomfort in close relationship, odd belief, magical thinking, okay, which is inconsistent with cultural norm. Unusual perceptual experience, including bodily illusions, suspiciousness or paranoid ideation. First row, please don't talk. Odd thinking and speech pattern, inappropriate affect, eccentric behavior or appearance, lack of close friends and confidence, excessive social anxiety that does not diminish with familiarity. Okay, so what happens कि sometime कुछ लोगों को phobia होता है कि they cannot talk or speak in public, they cannot go in public places, especially when it is not known to them. But gradually when they start to approach these places, the phobia decreases. But in schizoid personality अब बार-बार patient जाएगा वहाँ पे तब भी उसको comfort नहीं आएगा. They won't be comfortable among the classmates itself. They won't be comfortable with their family members also. ठीक है? Just few of the symptoms: bizarre behavior, checking out. This is lack of close friend, excessive social anxiety. Diagnostic criteria, again the clinical features which we have learned, that is the diagnostic criteria. Okay, pervasive pattern of eccentric behavior and anomalies. Which are these? These can be inappropriate or constricted affect, odd eccentric behavior and appearance, poor rapport with others, odd belief, magical thinking, suspiciousness and paranoid ideation, unusual perceptual experience including somatosensory disturbances. Speech may be somehow very elaborated or vague, may not talk but make sense. Okay, these symptoms must be present for at least 2 years to make a diagnosis of schizoid personality, and they should not be attributed to any medical use condition or substance use. Again, in differential diagnosis, you should be able to differentiate schizophrenia to schizotypal from schizophrenia and schizoid personality, and avoidant personality and autism spectrum disorder. Autism का patient भी social जगह पे नहीं comfortable होता है, उसको भी social anxiety होती है, but there the communication and repetitive behavior is a problem. He won't be able to communicate anywhere autism spectrum disorder का patient. And there is another thing which is called repetitive behavior. एक चीज को बार-बार अगर touch कर रहा है, ऐसे-ऐसे करने की आदत होगी उसको. Especially sensory stimulation के लिए, if the patient is repeatedly moving his hand or finger, flap करता रहेगा. ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया. स्किजोटिपल, क्या डिफरेंस है स्किजोफ्रेनिया और स्किजोटिपल में? हु कैन टेल मी? बोलो बोलो, कुछ डिफरेंस है या नहीं है? क्या है? तो फुल ब्लोन साइकोसिस इज सीन इन स्किजोफ्रेनिया, जो ज्यादा सिवियर साइकोसिस है. ठीक है, जो थोड़ा सा ऑड एक्सेंट्रिक बिहेवियर मिलेगा, दैट इज फॉर स्किजोटिपल, जैसे आपने बोला. ठीक है, कुछ ऑड होगा बट नॉट टू द लेवल ऑफ स्किजोफ्रेनिया. ठीक है. पीडीडी, दैट इज परसिस्टेंट डेल्यूजनल डिसऑर्डर, नाम में ही छुपा हुआ अगेन डेल्यूजन है जो कि परसिस्टेंट है. ठीक है, दैट डेल्यूजन इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन. सो it is also known as paranoid psychosis. It is a chronic psychiatric condition characterized by presence of persistent non-bizarre delusions without other significant psychotic symptom. Delusion के अलावा जो और psychotic symptoms हमने इससे पहले clinical features देखे हैं, वो इतने prevalent नहीं होते हैं या फिर होंगे ही नहीं. किसी किसी केसेस में सिर्फ delusion होगा, कुछ और hallucination, कुछ behavior abnormality, कुछ functional abnormality होगी ही नहीं. Okay. So non-bizarre delusion, and non-bizarre means कि this delusion can be correlated with his cultural or his occupational or social
सिग्निफिकेंस कैन बी गिवन टू द डिल्यूजन कि उसके होने के चांसेस हैं, आप एक प्लॉजिबल मीनिंग दे सकते हो डिल्यूजन को। डिल्यूजन्स आर टिपिकली ऑफ अ सिंगल थीम और अ सेट ऑफ थीम। Now because of these delusion functioning impair हो सकती है। For example, a person has just a delusion कि उसके workplace में so and so, suppose his boss is planning something against that person। अभी वो जॉब पे जा तो रहा है बट उसका डिल्यूजन फिक्स है कि बॉस कुछ गलत करने वाला है, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, अपने जो 100% पोटेंशियल है वो दे नहीं पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो घर आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल है, वो अपने दोस्तों से मिल रहा है बिल्कुल नॉर्मल है, किसी और के लिए वो डिल्यूजन ही नहीं है, बस अपनी वर्क प्लेस पे है, तो हिज ऑक्यूपेशनल लाइफ इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब। ठीक है, समझ में आया। एपिडेमियोलॉजी अगर देखें तो अगेन प्रिवेलेंस इज क्वाइट लो, मोर कॉमन इन इंडिविजुअल ओवर 40 years and old, more slightly more common in women, and it is chronic case and insidious onset. Again biopsychosocial factors you should remember, genetic history होगी, patient family history of psychiatric illness हो सकता है, possible abnormalities in dopamine and serotonin system, psychological factor like social isolation, trauma, cognitive distortion, stressful life events especially in adulthood can trigger disorder. Clinical feature, non-bizarre persistent delusion, they are fixed and impervious to reasoning, otherwise normal functioning in other areas of life is there. नो मेजर कॉग्निटिव और मूड डिस्टर्बेंसेस, मूड डिस्टर्बेंस अगर होगा भी तो इट शुड बी एसोसिएटेड विद डिल्यूजन, डिल्यूजन की वजह से पेशेंट मे गेट इरिटेटेड, मे गेट डिप्रेस्ड, ओके, सोशल विड्रॉल एंड इरिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ डिल्यूजन। टाइप्स ऑफ डिल्यूजन क्या क्या हो सकते हैं परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर में? persecutory delusion, belief of being targeted by other, grandiose delusion, having the sense of self importance or abilities, erotomanic delusion, believe that someone of higher authority is in love with that individual, somatic delusion, false belief regarding the body, like my body is being infested by some parasite, or some olfactory foul smell is there, so olfactory delusions can be there. Delusion of jealousy, especially pathological or morbid jealousy we call it, believe that partner is unfaithful. इन मिक्स टाइप इज समथिंग जिसमें दोनों के जो ऊपर के जो सब टाइप है उसमें एक से ज्यादा डिल्यूजन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड अनस्पेसिफाइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी सब टाइप्ड इनटू अदर, दिस इन डिल्यूजन्स के अलावा कुछ और है तो दैट इज अनस्पेसिफाइड। अगेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, दिस डिल्यूजन मस्ट परसिस्ट फॉर 3 months, ठीक है, एंड हेलुसिनेशंस आर आइदर एब्सेंट और नॉट प्रोमिनेंट, एंड इट शुड नॉट बी स्किज़ोफ्रेनिया से नहीं मिलना चाहिए इसकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है, एंड दे शुड नॉट बी ड्यू टू एनी अदर मेडिकल कंडीशंस, ओके। अगेन इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट पर्सिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर स्पेशली फ्रॉम पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सम पर्सन की पर्सनालिटी ही पैरानोया के लेवल पे होती है, ठीक है, उसमें पैरानोया हर एक डायरेक्शन में होगा, सिर्फ एक जगह पे पैरानोया नहीं होगा। मूड डिसऑर्डर, affective disorder, dementia with neurocognitive disorder, cultural or religious belief, certain cultural and religious belief are prevalent everywhere, ठीक है, उसको delusion से confuse नहीं करना है, ठीक है। Now this is what we have learned, the clinical features and how the patient present of schizophrenia, schizotypal and PDD, ठीक है। Evaluation we are seeing, हर एक patient का psychiatric evaluation कैसा होता है, हिस्ट्री से शुरू करेंगे। आप लोग भी जब पेशेंट कब अगर फिजियोथेरेपी की बात करें, पेशेंट आता है तो आप पूछते हो ना कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, वैसे ही चलना है। डिटेल अबाउट द नेचर, ऑनसेट, ड्यूरेशन, सिवियरिटी ऑफ सिम्टम, तो तीनों की अलग अलग थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप मिलेंगे अगर आप इनके चीफ कंप्लेंट्स में जाएंगे, उसको ढंग से इलेबोरेट करेंगे कि कब शुरू हुआ था, कितने समय से है, क्या क्या एरियाज ऑफ लाइफ अफेक्टेड है, देन एसोसिएटेड बिहेवियरल चेंजेस तो नहीं है, कोई एसोसिएटेड मूड सिम्टम तो नहीं है, सब्सटेंस यूज तो नहीं है, कोई पास हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इलनेस तो नहीं है, या पास हिस्ट्री ऑफ कोई और साइकाइट्रिक इलनेस तो नहीं है, कोई मेडिकल या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द सिम्टम, कोई हेड इंजरी हो गई उसकी वजह से सिम्टम आ गया, सो यू शुड ऑल बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकाइट्रिक इलनेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी सॉ इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स की जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है। पर्सनल हिस्ट्री कैसी है, प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी कैसी थी, कोपिंग मैकेनिज्म कैसा था पेशेंट का, सोशियो ऑक्यूपेशनल रिलेवेंस कितना है पेशेंट का, बेटर वेदर ही सेफ सिक्योर्ड और नॉट, एंड अगेन केयर गिवर बर्डन एंड सपोर्ट सिस्टम। Then again in mental status examination, MSE is the diagnostic tool for psychiatric problems, okay? How आप पेशेंट से बात करके उसके थॉट में क्या abnormality है, उसके परसेप्शन में क्या abnormality है,
आपको मूड कैसा बता रहा है पेशेंट, आपको इफेक्ट कैसा लग रहा है, वो बोल कैसा रहा है स्पीच में, तो ये सब एबनॉर्मलिटी आपको एमएससी में मिलेंगी. ओके, सो की एरियाज टू एक्सेस: appearance and behavior, disabled appearance, inappropriate dress, catatonia or agitation. Eye to eye contact, patient might not look into your eye or talk, patient might always have fleeting eye contact. Psychomotor activity might be very much, patient is agitated, so he might not sit in one place, he might keep pacing around. Okay, speech can be disorganized, like I said, if thought is not clear, what we think we speak, right? So if our thoughts are not clear, then our speech will also be not clear. We may want to speak something, but we'll convey something else. Okay, it might be incoherent. Affect, as we said, ki affective symptoms are also there in schizophrenia. Affect can be irritable, it could be blunt. Patient, you cannot figure out whether the patient is happy or sad, or it could be inappropriate. Again, thought for process mein there can be derailment, there can be delusions. Okay, like we said, we see ki delusion is one of the key characteristic feature of schizophrenia also, and PDD also. Hallucination, in perception part, hallucination, whether their patient को आवाजें सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है. Sometimes visual hallucination can also be there. Then higher mental function में cognitive distortion, we have seen cognitive functions are also distorted in psychotic spectrum disorder. Then insight and judgment, which is most of the time impaired in patient. All right. I think your history taking class has been taken, na? Psychology history taking and examination class has been taken. So you might have read these all thing in detailed over there. Ki how do we evaluate the patient? All right. Certain diagnostic assessment tools we have. These are the scales like positive and negative syndrome scale. We apply this scale to see what are these positive symptoms, what are the negative symptoms, and there are certain rating given to these scales. If we rate these scales, uske according we can find out the severity of the illness. Suppose 20 marks का total scale है, 18 या उससे ऊपर आ रहा तो we'll say very severe, 15 to 17 आ रहा तो we'll say severe, mild, moderate, ऐसे करके we'll move on. Okay, so these are the scales. Lab investigation, of course, routine blood work, okay, to find out if any other organic cause is there or not there. Toxicology screen to find substance use. CT scan, MRI to rule out any neurological deficit is there. EEG to rule out any seizure activity is there or not. Okay, this is how we evaluate the patient. Now, when we come about treatment proper, so antipsychotic medications, everybody might have heard haloperidol or olanzapine. These are kind of medicine. They are also divided into second generation and first generation. So we commonly use second generation antipsychotic like olanzapine, risperidone, aripiprazole, quetiapine, or clozapine when patient is not responding to the above drugs, or first generation like haloperidol or chlorpromazine. What you should remember is कि there are certain side effects. बहुत बार patient won't take medication, they'll say we have side effects because of the medicines. So certain side effects of the medication, like for first generation medication, the side effects would be extrapyramidal side effect. Like patient might have rigidity, tremors, face में affective blunting can be seen. Whereas in second generation, more or less you will see metabolic side effect like weight gain, dyslipidemia. But when you will give it in a prescribed dose and you will also suggest patient to follow a healthy lifestyle, or there are certain drugs which can curb down extrapyramidal side effects also, which can be added. So these symptoms can be taken control of. But see, you'll always have to manage the risk benefit ratio. Not taking medication is going to be bringing far more complication than taking medications. Okay. Then there are certain adjunct medicines like benzodiazepine, mood stabilizer, and antidepressant. When we talk about psychosocial intervention, we have cognitive behavior therapy, family therapy to make family member understand the illness, because at the end of the day, they are the caretaker. They have to stay with the patient. Insight oriented therapy, most of the people don't have any insight regarding the illness. So they may be helpful in patient develops partial insight. And very important, I told you about social model, social skill training, vocational training. Rehabilitation centers can play a role in making patient face the society in a step-by-step process. Okay, supporting employment and vocational training, assertive community training, treatment and rehabilitation program. Now, yahan tak to we have seen the main management, but what is the role of physiotherapy in schizophrenia or other psychiatric illness?
So as I told you that the second generation antipsychotic might have certain weight gain ka side effect. So crucial role in managing the overall physical activity of the patient. Okay, with addressing motor deficit, there are cognitive deficit as well as motor deficit in patient. So to making the patient mobile again, uh, making the patient be physically little more active can also help patient lead a very fruitful life. Okay, addressing motor deficit, poor posture, reduced fitness by inactivity or medication side effect. So these all are going to reduce the risk of metabolic syndrome. Again, patient might come in grouped in physiotherapy. कि suppose हमने अपने ward से 4-5 patient को group में भेज दिया. So this is also can act as a group activity for them. In group में you can teach them these are the exercises you can do. Even at home you can tell कि when you go home these are the exercises which you can do at your home. Relaxation technique, breathing exercises are also important in treating the patient of schizophrenia. Group physical activity session fosters social interaction, reducing social isolation and enhancing overall quality of life. So with this, I'll conclude. Certain thing you should keep in mind. These all are covered under the psychotic spectrum diseases, schizophrenia, schizotypal, and PDD. The only difference is how they present. Some are quite severe, some are less severe, some are severe in only one symptom criteria. Timeline is different for every disease, and disorder may severely affect emotion, behavior, thought, perception. How you lead your life is treatment is going to help you understand how you lead your life. Okay, early diagnosis and comprehensive treatment, including pharmacological, psychosocial, and supportive intervention, can bring about a good change in the life of patients of schizophrenia and other psychotic spectrum disorder. All right, thank you. Very good afternoon. I'm Dr. Ritika Singh, Senior Resident in the Department of Psychiatry. So the topic for today's discussion is other psychotic disorders. As you all know, last time we had covered schizophrenia, schizotypal, and persistent delusional disorder. So moving forward in the same categories, under the same certain symptoms are going to be the similar, we'll have other psychotic disorder, which will include ATPD, which means acute and transient psychotic disorder, induced delusional disorder, schizoaffective, and postpartum psychosis. So we have 4 topics today under the one subheading. So we'll be covering these topic under the following headings. Moving on to the introduction part. So as you all know, last time also I have told you that psychosis is a term in which there are certain characteristic features, like there would be loss of contact with reality, patient would have delusions, will have hallucination, his behavior will be disorganized, he will be agitated. So a mental state characterized by loss of contact with reality, which leads to delusion, hallucination, disorganized thinking, and impaired functioning. Overall functioning, because of all these problems, is going to be deteriorated. So psychosis is something which covers, it is a broad term which covers all of this. So apart from schizophrenia, there are other psychotic disorder which are characterized by sometime temporary or sometime persistent loss of contact with reality. So certain examples of other psychotic disorders include acute and transient psychotic disorder, induced delusional disorder, schizoaffective, and postpartum psychosis. These are the topics which we will be covering one by one today. So they differ from schizophrenia. Last time also we have seen that schizotypal and persistent delusional disorder differ in terms of duration, severity, and underlying causes. So are these diagnoses. Early identification and interventions are crucial to prevent complications and to ensure a better outcome. So the prognosis of the disease is not worsen if we'll diagnose it early and we'll treat it early. Starting with ATPD, acute and transient. So it is going to be acute, very short, and transient for a brief period of time. नाम से समझ में आ रहा है acute and transient psychotic disorder. So it is a psychotic disorder which is characterized by an acute onset of psychotic symptoms. Psychotic symptom includes delusion, hallucination, disorganized behavior, which resolve within weeks or few months. And more often than not, it is associated with certain acute stressor.
maybe certain life-changing event, maybe certain financial stressor, some emotional stressor can be associated with the same. So sudden onset, brief duration, less than 1 month, and most of the cases recovery occur almost all. So when we talk about epidemiology, the global prevalence vary by region to region. Okay, it is seen that ATPD is comparatively higher in developing countries in comparison to developed country. More common in women than men, but the data is not very clear regarding this. Typically seen in young adults 20 to 40 years and higher reported in Asia, Africa as compared to Western countries, which we have already seen. So the factors or the causes, like last time we discussed biopsychosocial model of disease. This time also we'll see there are certain biological factors like certain genetic predisposition, neurochemical dysregulation, especially dopamine is one chemical, and then psychological acute stressor. In this case, acute stressor is very important. Socio-cultural pressure and substance use and sleep deprivation can be also associated with the initiation of this disease. So clinical features, the symptom appears acutely. यहाँ पे acute को define किया है within 2 weeks of time. So again we have seen the certain clinical features like delusions, which can often be persecutory or grandiose in nature. Persecutory last time also I told you, and अभी आप लोगों ने भी बताया था कि शक वहम करने लगता है, ठीक है, कि जो लोग नहीं, जो सच नहीं है उसको भी बोलता है कि मेरे खिलाफ लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं, ठीक है. Hallucination, you told me कि आवाजें सुनाई देती हैं जो आसपास नहीं होती है, उनकी आवाजें सुनाई दे रही है, या कोई दिखाई दे रहा है जो और लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है. Disorganized speech and behavior, emotional instability, can be very agitated, can be very quiet, and can be very aggressive as well, physically aggressive as well. Okay, there could be a stage of confusion and disorientation in this condition. No, we'll discuss about it afterwards. Okay, I'll tell you. Duration, symptom typically last a few days to week but resolves within 1 month. So ICD-10 ने कुछ diagnostic criteria दिए हुए हैं. Whatever we have seen in clinical features up till now, these are going to be the diagnostic criteria as ICD-10 के भी, but language थोड़ी सी बनाई हुई है. So development of psychotic symptom within 2 weeks या less. तो 14 days या उससे कम में अगर आ रहे psychotic symptom की history है तो ATPD के अंदर will classify it. Then typical syndrome of psychotic features, which we have already discussed, कि आपका delusion, hallucination, disorganized behavior. Come sit. ठीक है. Then presence of acute stressor, resolves within 1 to 3 months with complete remission expected. Okay, and it should be, अगर define कर रहे हो तो you should keep in mind कि no evidence of schizophrenia और other कोई affective disorder है, उसके symptoms तो नहीं है. कोई deliberate substance induced या organic कोई head injury या इसकी वजह से तो नहीं आया, then we will classify it into another form of disease. Okay, तो मोटा मोटा ATPD में ये याद रखना है, जल्दी शुरू होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, एक स्ट्रेसर साथ में है, सिम्टम्स मोर और लेस जैसे आपको स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स मिलते हैं वो मिलेंगे और बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे मिलेगा तो. ठीक है. उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें डिफरेंस क्या होगा कि लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है, ये एक्यूट और ट्रांजिएंट है, स्किज़ोफ्रेनिया इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड क्रॉनिक कोर्स. बाइपोलर डिसऑर्डर में यू विल हैव एसोसिएटेड मूड सिम्टम्स. सब्सटेंस इंड्यूस में क्लियर लिंक टू सब्सटेंस, नो अदर कोई और सिम्टम नहीं होगा लेकिन सब्सटेंस लेना इज द की फीचर ओवर हियर. एंड डेलीरियम इज मोर और लेस एसोसिएटेड विद सम मेडिकल कंडीशन एंड देयर विल बी फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस. ठीक है. So how are you going to assess? So last time आपको assessment, history taking और evaluation part बताया था. तो here I'll tell you in brief कि इसमें positive points क्या देखने की onset short duration में हुआ है. Duration and progression of symptoms sudden versus gradual तो नहीं है. Associated precipitating factors such as stress, trauma or substance use. Okay. Then you have to see कोई personal या family history of psychiatric illness तो नहीं है. You have to identify any stressor, their coping abilities and social support. And in MSc, especially you will see the thought process, delusion अगर तो नहीं है, perception, mood and insight. Okay.
रूल आउट ऑर्गेनिक कॉज, कोई हेड इंजरी का हिस्ट्री तो नहीं है, आपको हिस्ट्री पोर्शन में आएगा. यू विल हैव टू रूल आउट कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे चल रहे हैं. ऑलराइट. डायग्नोस्टिक के लिए आपको लैब इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अगर एसोसिएटेड ईईजी कराने की जरूरत है, सीटी एमआरआई कराने की जरूरत है, तो यू कैन डू इट. बिकॉज अगर एक्यूटली कोई साइकोटिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो बहुत बार वो कोई ऑर्गेनिक या मेडिकल कॉज रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें साइकोटिक सिम्टम तो होंगे बट वो डायग्नोसिस मेडिसिन के अंडर आएगी रेदर देन साइकाइट्री के. तो ऐसे में अगर हम गलत मैनेज करेंगे ना तो पेशेंट की लाइफ थ्रेटन हो सकती है. ऑलराइट. देन स्केल्स, आई हैव लास्ट टाइम आल्सो टोल्ड यू कि बीपीआरएस है, आपके पैन स्केल है, तो ये सब आप देख लगाएंगे. मैनेजमेंट पार्ट में एंटीसाइकोटिक्स आप सेकेंड जनरेशन लाइक ओलैंजापीन, रिस्पेरिडोन और फर्स्ट जनरेशन हेलोपेरिडोल दे सकते हैं. बेंजोडाइजेपिन स्पेशली क्लोनाजपाम या लोराज़ेपाम, बोथ इंजेक्टेबल और ओरल in initial phase to reduce the agitation of the patient and to help patient sleep. If a patient is persisting harm, is presenting harm to himself or his surroundings, then hospitalization should be considered. Certain cases, acute cases of psychosis requires hospitalization. So in that case, patient के attendant लेके आते हैं patient को, and at that time, a quick and thoughtful management of patient is necessary. Monitoring follow-up, regular assessment of symptom resolution, medication adherence, and potential relapse prevention. So if you once know कि certain triggering factor हैं जिसकी वजह से इस बार ये disease आई है, तो you can address them and you can tell them how to cope up with them and how to maintain distance from certain stressing factor. Strong family and peer support is also helpful. Psychoeducating the patient regarding the illness, need of medications, need to continue medication for how long period of time, repeated follow-up, and staying away from substances is something you'll have to tell patient when you're psychoeducating the patient. Relapse prevention, identify and manage triggers, encourage stress management strategies, and provide psychotherapy if needed. So prognostic factors, if we'll see, it is seen in comparison to male, female gender have better chances of resolving the disease in a better way. Acute onset and presence of an identifiable stressor. अगर आपको पता है कि stressor की वजह से ही disease आई है, rather than बिना किसी stressor के, so there are chances कि there will be a good outcome of the disease. Okay. There are chances that this disease in future may be converted into a chronic course. It can convert into schizophrenia or chronic psychotic disease. All right. So this is about ATPD. Next, we'll move on to induced delusional disorder. So you, as a name suggests, it is induced. ये डाला गया है, ठीक है? Delusion है नहीं, डाला गया है. So in the picture also you can see there are two individuals. So induced delusional disorder is also known as folie dx. Okay? क्या बोलते हैं? Folie dx. It is a rare psychiatric condition in which a delusion is transmitted from one person to another. ठीक है? So what happened? There is one primary person and another secondary person. So primary person is the one who has the psychiatric illness. He might have delusional disorder, he might have schizophrenia, but due to the close relationship with the secondary person, that person transfers his delusion and his thoughts to another person. ठीक है? So the secondary person might not have any disease, but because of how closely he is attached to the first primary person, that delusion might get transferred or induced into that secondary person. समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है? So it is under पहले के जमाने में इसको shared psychotic disorder या communicated insanity भी बोलते थे. Communicated एक से दूसरे को communicate हो रहा है और shared because share कर रहे हैं दो लोग अपना delusion. All right? Shared delusional belief occurs in close emotional relationships, example family and partners. Secondary individual adopts the delusions of primary one. It is very rare. Shared psychotic delusion, shared delusional disorder is quite rare. Okay. Some cult might have some religious practices or some other form of practices which may or may not include this kind of delusion. Okay. Certain risk factors are associated with induced delusional disorder, like social isolation. So both primary and secondary person are in a close relationship and they are socially isolated from outside world. They have very strong co-dependent on each other, and pre-existing psychiatric illness is present in the primary person.
So psychosocial factors include dependence on the dominant person, emotional closeness, and suggestibility. Suppose there are two sisters living in the same house. Elder sister has psychiatric illness. Okay, the younger sister doesn't have psychiatric illness, but they do not go outside. They just talk to each other. They have no idea what is going on in the outside world. Maybe their family relationship or dynamic is not good. उनके parents की आपस में नहीं बनती, घर में लड़ाइयाँ चलती है. फादर माइट भी सब्सटेंस यूज करते हों, आसपास का माहौल पता ही नहीं है, घर के बाहर भी अगर जाएंगी तो साथ में ही जाएंगी. तो ऐसे में क्या होता है, दैट सेकेंडरी पर्सन हैज नो आइडिया ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है. उसके लिए कांटेक्ट पर्सन सच्चाई सब प्राइमरी पर्सन है. सो इफ प्राइमरी पर्सन इज सेइंग कि वो इंसान गलत है तो शी बिलीव्स इट. कोई आप उसके पास प्रूफ नहीं है कि वो गलत है, अगर आप प्रूफ प्रेजेंट भी करोगे तो वो मानेगा नहीं सेकेंडरी पर्सन भी उसको. ऑलराइट. So emotional closeness and suggestibility. So biological factors like genetic predisposition to psychiatric illness, social factors, isolation from outside world, environmental stressor, family conflict, cultural beliefs. Certain cultural beliefs भी होती है जो शेयर की जाती है, but कभी-कभी वो cultural belief delusional level पे भी पहुंच जाती है. So that could be one of the causative factor. So when we talk about clinical features, we have primary versus secondary. Okay. So primary is inducer who has a genuine psychotic disorder, example schizophrenia. Secondary adopts a delusional belief but may not have an underlying disorder. Development of shared delusion occurs gradually over time. ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, often unnoticed by the family members. Other member of family को starting में पता नहीं चलेगा, starting में लगेगा चलो उसकी जैसी बात कर रही है, उसके जैसे बोल रही है, but eventually वो उसके जैसा the secondary person will adopt all the characteristics and traits of primary person. All right. So as you can see, it is shared among the two individuals. So what you will see, the behavioral changes, the affected individuals, both primary and secondary, they will start living in isolation. They will reinforce their shared delusions on each other. So अगर बड़ी बहन ने बोला जो पड़ोस वाले हैं ना वो लोग बहुत खराब है, वो हमारे घर में कुछ कुछ जादू टोना कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वाला भी बोलेगा हाँ आप सही बोल रहे हो, वो अपने फैमिली को भी यही कम्युनिकेट करेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है. या अगर वो किसी दिन आपने पूछा क्या हो रहा है तो दैट सेकेंडरी पर्सन उसी कन्विक्शन से बोलेगा कि हम जो हमारे पड़ोस वाले हैं हम पे जादू टोना कर रहे हैं. Reinforcing shared delusional belief without external reality testing. It doesn't matter बाहर क्या हो रहा है, ठीक है. Anxiety, suspiciousness and social withdrawal. Secondary individual may exhibit behavior consistent with delusions such as avoiding perceived threat. तो वो अगर primary वाला बाहर नहीं निकल रहा है घर से बाहर क्योंकि उसको पड़ोसियों से डर है, तो secondary वाला भी निकलना बंद कर देगा, नहीं जाएंगे because पड़ोसी मुझे नुकसान कर देंगे. So the same behavior pattern is followed by the secondary person also. Then if you will present, it will adopt all the characteristics of disorder. She in general, अगर हम biologically बोले तो first person has the disorder, secondary doesn't. All right. So both individuals strongly adhere to their shared belief and dismiss opposing viewpoint. अगर आप लोग उनको confront भी करोगे ना, they'll say against you. नहीं आप गलत हो, हम सही हैं. ठीक है, they will bring certain reasoning of their own to stand with their point. They lack awareness of the irrationality of their beliefs and may be resistant to seek help. The secondary person often shows improvement or resolution of symptom when separated from primary individual. Though it will take time, but it is also seen कि अगर secondary person को primary से दूर किया जाए, तो धीरे धीरे secondary person का जो delusion है वो resolve होने लगता है. Diagnostic criteria same जो हमने भी clinical features पढ़े हैं. 2 or more people share the same delusion or delusional system and support one another in this belief. They have unusually close relationship. There is a temporal or contextual evidence that the delusion was induced in the passive member of the pair of group by the contact with active member. सब टाइप भी होते हैं, ठीक है. कभी कभी दो, जैसे 2 लोगों में हुआ तो फोले डीएक्स कॉमनली जिसको हम बोलते हैं, 3 लोगों में हुआ तो फोले ट्रायोस, फोले फैमिली, फोले प्लशियोर, दैट इज ग्रुप में. अगर आपको याद होगा एक बुराड़ी केस हुआ था, उसमें एक फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स दे वर फाउंड डेड, ठीक है. तो ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वो भी एक केस हो सकता है मास डिल्यूजनल या फिर आपका ये फोलियो फैमिली का. कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ, बट एक सस्पिशन था कि ये शेयर डिल्यूजन डिसऑर्डर जैसा कुछ हो सकता है.
डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्किजोफ्रेनिया आपको पता है कि परसिस्टेंट डिल्यूजन जो होंगे इन्फ्लुएंस नहीं होगा दूसरा इंसान, ठीक है। पीडीडी में भी यही है। कुछ कल्चरल बिलीफ्स होते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, याद रखना कि किसी किसी कल्चर में माना जाता है कि सपोजिटली कि काला कपड़ा पहनना खराब है, ठीक है ना। वो कल्चरल बिलीफ हो सकता है, वो ये नहीं कि एक पर्सन ने माना है दूसरे पर्सन भी मानेगा इसलिए मान रहा तो डिल्यूजन हो गया, बट वो कल्चर में सब जगह माना है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कुछ फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मलिंगरिंग की लोग जानबूझ के दिखाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कन्विक्शन और चैलेंजेस के साथ डिल्यूजन कम हो जाता है। अगर आप कन्विक्ट करोगे, कुछ रीजनिंग दोगे, तो वो उस कन्विक्शन के साथ नहीं बोलेगा पेशेंट, ठीक है। देन सब्सटेंस इंड्यूस में सब्सटेंस यूज है। मूड डिसऑर्डर में आपको मूड अफेक्टिव मूड सिम्टम्स मिलेंगे। So, well, you'll take the history in this case, you will assess how close the relationship between the two individuals is and how socially isolated they are from outside world. So, these are the two important factors you will find in history. Okay. And then फिर gradually family से पूछोगे कि पहला इसका nature कैसा था secondary person का, उसके बाद धीरे धीरे over what time nature started to change. Gather input from family or caregiver to understand the influence of dominant individual and social dynamics. MSc में you will evaluate thought content for shared delusion, level of insight, emotional dependence between individual. Then again diagnostic investigation में you have to rule out कोई medical या neurological cause तो नहीं है. Separation assessment is something. Observe changes in delusional belief when the affected individual is separated from the primary delusional person. So once you separate these two people from for quite a time, this is also a part of management. ठीक है. So psychological symptoms जो सेकेंडरी इंडिविजुअल में है विद टाइम हम उसमें कम हो जाते हैं. उसको थेरेपी से हो सकता है दवाई की सेकेंडरी इंडिविजुअल में जिसमें डिसऑर्डर नहीं है दवाई की जरूरत ही ना पड़े. विद थेरेपी विद सेपरेशन फ्रॉम द प्राइमरी इंडिविजुअल he or she might resolve to his premorbid state. Then primary individual might require antipsychotic and mood stabilizer. And secondary individual may at some time because अगर affective symptoms बहुत आ गए हैं उसका behavior बहुत ज़्यादा खराब होने लग गया तो short term antipsychotic short term के लिए दे सकते हैं या फिर कोई anxiolytic की उसकी anxiety part कम हो जाए उसके लिए दे सकते हैं. Psychotherapy to challenge delusional belief and enhance insight. And most importantly family and social intervention. You have to educate the family that इसका दूसरा सेकेंडरी पर्सन का प्राइमरी पर्सन के साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप कैसे सेकेंडरी पर्सन को हार्म कर सकता है, हार्म कर रहा है. हो सकता है प्राइमरी पर्सन की डिजीज बहुत सिवियर उसकी हो, उसके ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लग जाए, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है कभी वो फुल रिकवरी ना कर पाए, अगर करे भी तो माइट बी आफ्टर एजेस, ठीक है. और तो लेकिन सेकेंडरी पर्सन इज समवन जो कि फुल्ली फंक्शनल हो सकता है जस्ट बिकॉज जस्ट आपको सेपरेट करना है, ठीक है. So early intervention and separation and strong social support are something favorable factors. Poor prognostic factor क्या है, अगर long term से साथ में long lasting delusion है और जैसे ही वापस लेके आ रहे हैं separate करने के बाद वापस delusion form हो जा रहा है तो this is poor prognostic factor. Done. Induced delusional disorder समझ में आया. थर्ड आपका है schizoaffective. Schizophrenia भी है, affective symptoms भी है, यानी कि mood symptoms भी है. तो दो चीजें हैं इसमें. Schizoaffective disorder is a complex mental health condition which is characterized by presence of both schizophrenia-like symptoms जैसे कि delusion, hallucinations and mood disorder, mania, depression दोनों हो सकता है. First introduced by Kassanen in 1933 as a disorder combining both schizophrenia and mood disturbances. So presence of key features है psychotic symptom independent of mood symptom and mood symptoms are prominent for a substantial duration of illness. देखो क्या होता है ना बहुत कुछ टाइम के लिए जो साइकोटिक सिम्टम आ जाएंगे उसमें उसके बाद मूड सिम्टम आएंगे, ठीक है, और फिर वो मूड सिम्टम काफी प्रोमिनेंट रहेंगे. सो लाइफ टाइम प्रिवेलेंस इज 0.5 to 8%. ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मेल एंड फीमेल अगर बाइपोलर टाइप का स्किज़ोअफेक्टिव है. डिप्रेसिव टाइप ऑफ स्किज़ोअफेक्टिव इज सीन मोर कॉमनली इन फीमेल्स. Depressive type is more common in older, whereas bipolar type is more common in younger adult. Age of onset, like in schizophrenia, we have seen कि age of onset in female is little later in comparison to male. Similarly, in schizoaffective also, it is quite later in comparison to male.
So again, you have strong neurobiological factor in etiology, strong genetic component with evidence suggesting familiar aggregation of both schizophrenia and mood disorder. Abnormal structure and function in the brain, then neurochemical imbalance, psychological factors, substance abuse, major life events, and childhood trauma. Now we'll see with clinical feature. Clinical feature में we can have schizophrenia-like symptoms, again delusion, hallucination, disorganized behavior, negative symptoms, and then you have mood disorder. Mood disorder का you can have depressive symptom, you can have manic symptom, like sadness, hopelessness, anhedonia, apathy, lack of interest वगैरह ये मिलेगा. Whereas manic symptom में काफी elevated या irritable mood मिल सकता है, बहुत increase energy है, बहुत बड़ी बड़ी बातें grandiosity हो रही है, बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग हो रही है, एक्सेसिव फेमिलियरिटी है, ये सब भी मिल सकता है. ठीक है, I'll tell you after the class. Okay, cognitive impairment, poor executive functioning, and impaired memory and attention. All right. Then we have diagnostic criteria. So F25 बोलता है schizoaffective disorder. So what are the diagnostic criteria? Presence of both definitive mood disorder, depressive or manic, and definitive schizophrenic symptoms are prominent simultaneously or within a few days of each other within the same episode of illness. Okay, यानी कि आपका जो स्किजोफ्रेनिया है और ये मूड सिम्टम है एक ही एपिसोड में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका मूड डिसऑर्डर पहले हुआ और पूरा रिजॉल्व हो गया उसके बाद आपका स्किजोफ्रेनिया हो रहा है. नो, ये एक ही सिंगल एपिसोड में दोनों चीजें होनी चाहिए. As a consequence of which episode does not match the criteria of either schizophrenia or mood disorder. It should be applied for patient who exhibit symptom of schizophrenia or affective symptom. It should not be applied in patient जिनमें अलग-अलग episode में schizophrenia और mood disorder आ रहा है. So DSM-5 ने भी यही criteria दिया है. उन्होंने बस एक चीज ये बोली कि जो delusion और hallucination है वो 2 weeks पहले होने चाहिए mood disorder से. ठीक है, एटलीस्ट 2 weeks का आपका symptom होना चाहिए स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स का, फिर मूड डिसऑर्डर आना चाहिए. बाकी मोरल लेस सिमिलर टू आईसीडी. सो देयर कुड बी मेनिक टाइप जिसमें मेनिया के सिम्टम्स ज्यादा हैं, दे कुड बी डिप्रेसिव टाइप जिसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा हैं, दे कुड बी मिक्स्ड टाइप जिसमें दोनों सिम्टम्स होते हैं. Differential diagnosis, similarly you have to differentiate it with bipolar disorder with affective symptom. आपका पोस्ट स्किजोफ्रेनिया डिप्रेशन भी एक चीज होती है कि स्किजोफ्रेनिया के बाद भी आपका डिप्रेशन आ जाता है, उससे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और बाकी कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है. ठीक है, अगेन इन हिस्ट्री रिमेंबर कि एक ही एपिसोड में आपके स्किजोफ्रेनिया और डिप्रेशन के सिम्टम है. Assess the duration and pattern of mood and psychotic symptom, including periods of overlap and independent psychotic episodes. If psychotic symptom persists for at least 2 weeks in the absence of mood disorder. MSc में affect part में देखोगे कोई डिप्रेसिव तो नहीं है या elated affect तो नहीं है, मूड देखोगे पेशेंट का, थॉट में देखोगे कि आपका डिल्यूजन तो नहीं आ रहा है, परसेप्शन में देखोगे हेलुसिनेशन तो नहीं आ रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन और इंसाइट डेवलप करोगे. मैनेजमेंट पार्ट में रिमेंबर आपका ये अफेक्टिव भी है तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, आपका एंटी साइकोटिक भी आएगा और आपका एक मूड स्टेबलाइजर भी आएगा अलोंग विद, अगर डिप्रेसिव टाइप है तो एंटी डिप्रेसेंट आएगा. ठीक है, एंटी साइकोटिक में ओलैंजापीन, हैलोपेरिडोन, रिस्पेरिडोन, लिथियम एंड वैल्प्रेट आर गुड मूड स्टेबलाइजर, एंड एनी मोड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एसएसआरआई जैसे कि एसिटाइलोप्राम या सर्ट्रिलिन है ये दे सकते हैं. हॉस्पिटलाइजेशन इफ नीडेड, अगर सुसाइडल रिस्क है, पेशेंट बहुत ज्यादा साइकोटिक हो रहा है या फिर पेशेंट रिफ्यूजल टू ट्रीटमेंट है तो हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, एंड उस टाइम पे फिर आपको एक क्विक मैनेजमेंट करना पड़ता है. टू साइको एजुकेट द पेशेंट इन ऑर्डर टू टीच पेशेंट द कोपिंग मैकेनिज्म, हाउ टू इवैल्यूएट फॉर फर्दर रिस्क, इसके लिए साइकोथेरेपीज की हेल्प ली जा सकती है. Social skill training to improve interfunctional functioning, interpersonal functioning, vocational rehabilitation, community support, regular psychiatric evaluation to prevent relapse. So good prognosis, अगर premorbid functioning, disease होने से पहले अगर patient काफी अच्छे से function कर रहा था, एक अच्छा educated इंसान है, उसका socio economic status ठीक चल रहा है, वो उसकी coping mechanism अच्छी है, ठीक है, अच्छा social support है,
ठीक है, वो अपने काम को लेके पॉजिटिव है, अगर ये सब चीजें डिजीज होने से पहले की जो उसकी पर्सनालिटी है वो अच्छी रही है तो ये गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है कि रिजोल्यूशन सही होगा, आउटकम अगर डिजीज हो गया ट्रीटमेंट देंगे तो आउटकम अच्छा आएगा। अगर ट्रीटमेंट से बार बार छोड़ दे रहा है, फॉलो अप के लिए सही से नहीं आ रहा है, तो दिस इज बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कि इसमें क्रॉनिक केस में चला जाएगा। डिप्रेसिव टाइप ऑफ schizoaffective disorder generally has a better outcome. Okay, डन। स्किजोअफेक्टिव में मोटा मोटा ये समझना है कि स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी हैं और अफेक्टिव सिम्टम भी हैं, लेकिन दोनों एक ही एपिसोड के अंदर है, अलग अलग नहीं है। आईसीडी सॉरी DSM-5 के अकॉर्डिंग कि 2 वीक्स पहले आ जाना चाहिए जो आपके साइकोटिक सिम्टम है मूड डिसऑर्डर से। ठीक है, फिर हमारा है आज का लास्ट पार्ट, पोस्टपार्टम साइकोसिस। टर्म पोस्टपार्टम का क्या मतलब होता है? आफ्टर बर्थ या आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, सो साइकोसिस अगर पोस्टपार्टम आ रही है तो हम इसको पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे रिस्क ऑफ हार्म टू बेबी हो सकता है। ठीक है, under the psychotic state mother cannot take care of a baby or she can have certain feelings of harming the baby. So यहाँ पे इसको it is quite necessary to manage it very quickly and in a very effective way. Postpartum psychosis is a severe mental health condition that occurs in the postpartum period, characterized by sudden onset of psychotic symptoms such as delusions, hallucinations, mood disturbances, and disorganized behavior, typically within 2 weeks after childbirth. Rapid progression and require urgent intervention due to risk of harm to self and baby. Not that common, 1 in 2 per thousand postpartum women. Recurrence rate is 30 to 50% in subsequent pregnancy if not treated. Suppose first pregnancy में patient को postpartum psychosis हुई है तो there are chances कि 30 to 50% recurrence rate है कि second उसमें भी होगी अगर आपने इसको treat नहीं किया है तो। ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद भी चांसेस रहते हैं, बट इफ द पेशेंट इज मैनेज्ड प्रॉपर्ली, उसको पता है इलनेस के बारे में, तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। मोर कॉमन इन फर्स्ट टाइम मदर, मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्री, हायर स्टिग्मा एंड अंडर रिपोर्टिंग इन सम रीजन। होता है कि बहुत जगह और जगह भी होता हो, जितना हमको ये रेट मिल रहा है इससे ज्यादा मिलता हो बिकॉज ऑफ स्टिग्मा और अंडर रिपोर्टिंग और नॉट नो मच अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस पोस्टपार्टम साइकोसिस, तो उसकी रिपोर्टिंग कम होती है। सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें यहाँ पे तो थोड़ा ये समझना है कि अदर देन जो हम न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस और डिजीजेस में पढ़ते हैं, रिमेंबर कि इसका कोरिलेशन देखा गया है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की डिसफंक्शन से। ठीक है, सडन हार्मोनल शिफ्ट्स आफ्टर डिलीवरी पर्टिकुलरली इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आर बिलीव्ड टू इन्फ्लुएंस द मूड रेगुलेशन एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू साइकोसिस। Hypothalamic pituitary adrenal axis का dysregulation has also been seen connected to mood instability. Then dopamine and serotonin and norepinephrine glutamate जो disbalance है वो you know already. Okay, जो postpartum time period होता है वहाँ पे lack of sleep, exhaustion female को बहुत होता है, तो it also leads to cognitive and emotional disturbances. स्पेशली अगर पास हिस्ट्री ऑफ कोई साइकेट्रिक इलनेस रही है या फिर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रही है, अगर आपकी फैमिली में विमेन किसी और को भी पोस्टपार्टम साइकोसिस की हिस्ट्री रही है तो देयर आर चांसेस कि आपको भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होगा ही होगा, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन। विमेन विद द हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर, स्किजोफ्रेनिया और पोस्टपार्टम साइकोसिस हैव अ हायर रिस्क. Certain autoimmune and inflammatory cytokines have also been said to be responsible for that, but the correct role is not been identified. Psychosocial factor, personal history of mental illness, inadequate coping mechanism and lack of emotional resilience. It can also exacerbate the psychological strain. Stressful childbirth experience or unplanned pregnancy, especially primary gravida है, primary pregnancy है, तो उसमें पता नहीं होता है कि how to take care of a child. The sleep pattern, the activities of the children is unknown. It is a state of आपको physical resilient भी होना चाहिए, physically भी और mentally भी resilient होना चाहिए. Emotional, financial हर तरीके की need आपको after a birth of baby होती है. ठीक है,
So if it is not planned, or if the partner or the family members are not supportive, so the stress and coping mechanism of the female is disturbed. It can also lead to certain, psychological downfall of a patient. Lack of social support, cultural expectation and pressure. Societal expectations surrounding motherhood, especially in cultures with high pressure for maternal perfection, can contribute to feeling of inadequacy and distress. Financial stress, lack of access to health care, and inadequate living condition can increase psychological burden. Any history of domestic violence है, childhood trauma है, कोई recent stressful event है, that can also lead pregnancy के time पे अगर कुछ ज़्यादा stress आ गया, can lead to postpartum psychosis. So very important, जो इसके psychotic symptom है, often they are related or surrounded towards baby, often related to baby. Delusions are often related to baby. Example, they might have certain urges to harm the baby or neglect the baby. Hallucination commanding harm to self or baby. Disorganized thought and speech, not taking care of baby, not breastfeeding the baby. Behavioral symptoms में neglect और over protectiveness towards the baby, या तो बिल्कुल neglect होगी या फिर over protective हो जाएगी कि other people are going to harm my baby. This can also come. Severe mood swing, very depressive, very euphoric, very agitated, irritability, emotional ability, infanticidal thoughts, and social withdrawal. Poor concentration and decision making. Mother might be exhausted, but still she cannot sleep. Confusion and memory disturbances. So it comes under the ICD classification F53.1, severe mental and behavioral disorders associated with purpura. So thus, क्या diagnostic criteria है? They occur within 6 weeks postpartum. Severe disturbance in behavior and perception, not attributable to medical conditions. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप 2-3 टर्म्स याद रखिए. पोस्टपार्टम साइकोसिस के अलावा 2 टर्म और होते हैं, पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन. पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज बेसिकली डिप्रेसिव सिम्टम्स होंगे, साइकोटिक सिम्टम नहीं होंगे, डिप्रेसिव सिम्टम ज्यादा होंगे. एंड पोस्टपार्टम ब्लू लेस सीवियर देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन होंगे, उसमें भी थोड़े से आपके डिप्रेसिव सिम्टम बट नॉट टू द सिवियरिटी ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. ठीक है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपका predominantly mood related symptoms such as persistent sadness, guilt, anhedonia and fatigue. Bipolar disorder, history of bipolar disorder or episodes of mania before pregnancy है. Schizophrenia अगर before pregnancy है, वो आपका pregnancy के time पे भी अब regulate हो सकता है. Suppose patient एक mood disorder के patient है, maintain well कर रही है जो भी दवाई चल रही है उसकी, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है साइन एंड सिम्टम फ्लक्चुएट कर जाए, पोस्टपार्टम टाइम पे साइन एंड सिम्टम फ्लक्चुएट कर जाए, तो वहां पे जो पहले से जो दवाइयां चल रही हैं वो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है. बहुत सारी दवाइयां प्रेगनेंसी के टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे सेफ नहीं होती हैं, तो उसमें चेंजेस लाते हैं. अगर पेशेंट किसी नोन केस ऑफ साइकियाट्रिक इलनेस है, उन दवाइयों को चेंज करने की वजह से भी मूड सिम्टम्स या साइकोटिक सिम्टम बढ़ सकते हैं. तो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये दूसरी बीमारी से अलग कैसे है. सो जस्ट क्या बोलते हैं डिफरेंसेस, फ्यू डिफरेंसेस कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपका लो मूड है और साइकोसिस में आपका रैपिड चेंज होगा मूड का. ठीक है. साइकोटिक सिम्टम्स आर यूजुअली एब्सेंट इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वे आर प्रेजेंट इन पोस्टपार्टम साइकोसिस. ओके. कभी कभी साइकोथेरेपी एंड लो डोज ऑफ मेडिकेशन से पोस्टपार्टम डिप्रेशन ट्रीट हो जाता है, बट साइकोसिस अगर है तो आपका नाइस एंड मतलब काफी हद तक आपको रैपिड इंटरवेंशन, हॉस्पिटलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम द मदर की नीड हो सकती है. ठीक है. मोर कॉमन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन कंपैरिजन टू पोस्टपार्टम साइकोसिस. अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, इससे भी आपको इनको सेपरेट करना आना चाहिए. पोस्टपार्टम सेप्सिस, इन्फेक्शन की वजह से भी पेशेंट डिलीरियम में हो सकती है, तो डिलीरियम में भी फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, याद नहीं होगा कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ, कभी पहचान रही है कभी नहीं पहचान रही है. तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन रूल आउट करना है, फीवर अगर तो नहीं है, कोई यूटीआई तो नहीं है, तो ये सब चीजों को ट्रीट करोगे तो साइकोटिक सिम्टम कम हो जाएंगे. सिमिलरली पोस्टपार्टम ब्लूज, डिप्रेशन है, साइकोसिस का डिफरेंस दिया हुआ है. ओके. डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, इसमें आपका साइकेट्रिक हिस्ट्री के साथ साथ आपको ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी देनी है. ठीक है. कोई डिलीवरी के टाइम पे कोई स्ट्रेसर तो नहीं था, विद इन डिलीवरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पोस्टपार्टम फेज में बेबी कैसा है, पेशेंट की हेल्थ कैसी है, तो ये सब चीजें भी आपको ढंग से ध्यान रखना होगा. कोई पास साइकेट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है इस पेशेंट में, साइकेट्रिक इलनेस की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है,
पोस्टपार्टम साइकोसिस या डिप्रेशन या कोई साइकेट्रिक इलनेस की। साइकोसोशल असेसमेंट, फाइनेंशियल, सोशल सपोर्ट, स्पाउस का सपोर्ट कैसा है पेशेंट का, ठीक है। इवैल्यूएट सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रेसर एंड कोपिंग मैकेनिज्म, स्क्रीन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, सब्सटेंस यूज, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। अगेन इन फिजिकल एग्जामिनेशन डू नॉट टेक इट लाइटली। आपका पेशेंट ऑब्स्टेट्रिक और गायनिक का पेशेंट भी है और साइकेट्रिक का पेशेंट भी है, और प्लस अभी उसने डिलीवरी करी है, तो शी हैज बीन थ्रू अ वास्ट अमाउंट ऑफ चेंजेस इन हर बॉडी। Check for signs of infection, endocrine dysfunction, neurological abnormality, general postpartum health, nutrition कैसा है, hydration कैसा है। MSc में be very sharp regarding कोई thoughts बेबी को harm करने को लेके तो नहीं है, okay? Evaluate insight, judgment, risk of harm to self or baby. Investigation में rule out organic causes, always rule out organic causes. कोई infection तो नहीं है, MRI, CT scan से कोई organic cause तो नहीं है। Hospitalization and safety measures, immediate hospitalization if the risk of harm to self or baby. Antipsychotics, atypical antipsychotics, basically they are comparatively जो safe है, olanzapine is safe, first generation में haloperidol आपका breastfeeding में भी comparatively safe है, ठीक है। mood stabilizer, lithium, valproate बहुत कम, ठीक है, फीमेल प्रेगनेंसी स्टेज में valproate कम, lithium ज्यादा फेवरेबल है। olanzapine एज अ मूड स्टेबलाइजर भी काम कर देता है। बेंजोडाइजेपिन वैसे तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है आपकी, बट इफ एट ऑल नीडेड दे सकते हो लो डोज। ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, इज वेरी सेफ। अगर प्रेगनेंसी में मतलब साइकोटिक सिम्टम आ रहे हैं या पोस्टपार्टम भी आ रहे हैं, अगर सुसाइडल रिस्क है, कैटाटोनिया है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस है। You have to also evaluate medication safety during lactation. Breastfeeding mother है, अगर suppose patient resolve कर गई है initially कुछ देर में, तो आपको ऐसी दवाई देनी है जो कि breast milk में कम डिस्चार्ज हो या फिर नहीं के बराबर डिस्चार्ज हो। Provide emotional support and psychoeducation to patient and family. Regular follow-up counseling on sleep hygiene, stress management, and gradually patient will return back to the normal activity. Early diagnosis, so strong social support, spousal support, family support, and adequate adherence to treatment. Poor prognostic में अगर आप डिले करोगे ट्रीटमेंट में, कोई पास्ट हिस्ट्री है साइकोटिक इलनेस की या रिकरेंट साइकोसिस की, बाइपोलर डिसऑर्डर की, या पास्ट हिस्ट्री ऑफ ये आपका पोस्टपार्टम साइकोसिस है, तो ये आपका पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आता है, एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस इन सेकंड इफ अनट्रीटेड. So to conclude, we have seen 4 kind of diseases today: ATPD, schizoaffective, induced delusional disorder, and postpartum psychosis. They have certain different characteristics from each other. However, the management part में दवाइयाँ might be same, but to evaluate them and how to approach for management is different for all the patients. You have to be approaching the patient pharmacologically, psychotherapy and social support. Education and awareness is very important. You should be aware about कि ये सब बीमारियां होती है, तभी आप अपने पेशेंट्स को समझा पाओगे, या अपने फैमिली मेंबर में किसी में देखते हो तो बता पाओगे कि ओके पोस्टपार्टम अगर पेशेंट थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है तो दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज समथिंग विच मे रिक्वायर ट्रीटमेंट. ओके, so these are the references, and with this we'll conclude.